So here we are with some topics related to class 12 जो कि हमारा है notice writing. So now notice writing comes in a writing skill part. Okay, and over here we get two questions out of which one we have to do. Now here it is like that a bifurcation of that marks is given over there. Format is of 1 marks, means this part. Okay, this will consist of 1 marks. Then the content, what we are writing it down, that will of 2 marks. And then overall whatever spelling and whatever grammatical correction is there or incorrect part is there, for that 1 mark will be provided or deducted. So basically over here we have got one notice which is for a thing which is found in the park by a person, and that only we have to notice it out, publish it out. Okay, so that if anyone is there who is the owner of that purse, okay, that purse to whom it belongs to will get that box. So over here we have got one. Suppose over here it is mentioned only about that park in your neighborhood. It can be any park, whether it is mentioned, okay, it's fine enough. If not, we can write down a name by our own only. Any park, any colony park, we will be mentioning it out. Okay, we would have simply mentioned notice, date and found, right? And then we will get to know about that in the detail, okay, about a park this notice is. But here we have clarified that part, it is a AG Conley Park. Okay, date, here we have, I had a less space, so that's why I just utilize these lines. So to make it more beautiful and a more bit lengthy one, so that it will look attractive and a catchy one, you can leave one line over here. Okay, so AG Conley Park, a date will be mentioned, notice can go up also here also, no issue with that. Bag found. Now this is to inform all the readers that a plastic bag has been found in the park on 18th January at around 5 p.m. इन ऑन एट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कहाँ पे, किस दिन और किस समय मिला है, स्विंग सेक्शन में, झूले का सेक्शन के नज़दीक में. क्लैरिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज एट द टाइम ऑफ सपोज अ पर्सन कम्स, तो वी कैन आस्क ना कि आप कहाँ पे बैठे थे और क्या था, कि कहाँ पे आप गए. सो टू मेक इट मोर गुड, स्विंग सेक्शन के पास में मिला, या फिर फाउंटेन के पास में, पूल के पास में मिला, ठीक है, गार्डन वाले एरिया में मिला, एनीथिंग वी कैन मेंशन, सो दैट एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ थोड़ा नाइसर वन में है. द बैग कंटेन्स फ्यू डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश इन इट, डिटेल दे देना है. फिर बाद में बोलना है भाई कि जो भी ओनर है वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए आइडेंटिटी प्रूफ के साथ और अपना नाम. इस वे में हम थोड़ा और इसको अच्छा कैसे बना सकते थे, सपोज अगर हम मेंशन कर देते हैं द ओनर ऑफ द बैग शुड कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड लिख देते हैं. अगर ऊपर मेंशन किया रहता कि आप सेक्रेटरी हैं या फिर ये हैं, वो दिया रहेगा तो यहाँ पे सेक्रेटरी लिख देंगे, नहीं दिया रहेगा तो सिंपल अपना नाम और नंबर यहाँ पे भी मेंशन करके छोड़ देंगे. अगर दिया है कि आप सेक्रेटरी हैं तो वी कैन राइट इट डाउन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडर साइंड विथ देयर आइडेंटिटी प्रूफ. और यहाँ पे whatever name is mentioned, boys will write down their boys name, girls will write down their girls name, right? Suppose next one is about drama competition होने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, या और भी बहुत सारा चीज़ होने वाला है, एनुअल फंक्शन होने वाला है, स्टूडेंट को इन्फॉर्म कीजिए एंड ऑल दैट, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन. सपोज ड्रामा कंपटीशन होने वाला है, उतना डिटेल में क्वेश्चन आई हैव नॉट मेंशन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या, क्वेश्चन विल बी क्वाइट लेंदी बट वी हैव टू फिगर इट आउट कि आखिर किस चीज़ के बारे में लिखना है, बस वही मेन चीज़ है. एक बार फिगर इट आउट कर लिए कि किस चीज़ के बारे में लिखना है, सो द एंटायर 5 लाइन 6 लाइन क्वेश्चन डज नॉट मेक एनी सेंस. इट इज़ जस्ट देयर टू कन्फ्यूज अस कि व्हाट वी विल राइट डाउन, हाउ टू स्टार्ट. जस्ट फिगर इट आउट कि क्या इंपॉर्टेंट, क्या पूछा गया है. ड्रामा कॉम्पिटिशन होने वाला है, बस दैट्स इट. इंटर स्कूल नोटिस, इस स्कूल का नाम मेंशन किया रहेगा, वो स्कूल का नाम वी विल मेंशन इट आउट, द डे वी विल मेंशन इट आउट, एंड इट वाज अबाउट इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन, लाइक दैट. This is to inform all the students from class 6 to 12 that our school is going to organize inter-school drama competition on 5th Feb from 9 a.m. till 12 noon, 2 noon in our school auditorium. That's it. क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कितने बजे होने वाला है, दैट्स इट, डन. एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया. So all the interested student must give their names
टू देयर डांस टीचर बाय 3rd फरवरी। सो जो भी स्टूडेंट, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यू कैन एडिट आउट। सो ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट्स टू टेक पार्ट in this competition must give their name. I missed that part, so you can edit on by your own. Okay, that is, all the interested students who wants to take part in this competition must give their name to their dance teacher by 3rd February. सो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम दे दीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। ठीक है, अगर और ज़्यादा कन्फ्यूज़न है भाई तो जाइए प्रिंसिपल के पास, सलाह मशवरा उनसे लीजिए, या वॉट एवर इट इज़ यू फिगर इट आउट, वेदर इट इज़ इंचार्ज, एकेडमिक इंचार्ज, और अ क्लास टीचर, okay, to clarify that one. So this was the 2-1. Okay, hope you find it better and more will be added on.